Hello everyone, very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको हम किस वे में बोल रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आपको पता चलेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, एंड कौन कौन से अमेंड अभी तक हुए हैं, जुडिशरी का क्या रोल है इन सारे अमेंडमेंट को देखने में, या फिर डॉक्यूमेंट दैट कीप इन्वॉल्विंग रेस्पॉन्डिंग चेंजिंग सिचुएशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है कि जो लिख दिया सिर्फ वही है? बिफोर दिस फ्रांस हैड न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन इन द लास्ट 2 centuries, ठीक है, आफ्टर रिवॉल्यूशन एंड ड्यूरिंग द नेपोलियन पीरियड फ्रांस अंडरवेंट कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग उन्होंने यहाँ पे टेस्ट करके देखे हैं। द पोस्ट रिवॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793 इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक, इसको बोला जाता है। एंड देन कमेंस द सेकंड फ्रेंच रिपब्लिक 1848 के अंदर। थर्ड आपका 1875 में। 1946 में अगेन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द फोर्थ फ्रेंच पब्लिक रिपब्लिक केम इनटू फोर्स। फाइनली फ्रेंच रिपब्लिक केम इनटू फोर्स विद द येट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो टाइम टू टाइम ये लोग नए नए अडेप्ट करेंगे। क्या इंडिया में ये चीज स्टैटिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड नॉट अनकॉमन फॉर द नेशंस टू राइट देयर constitution in response to change circumstances of the change of ideas within the society due to political upheaval. सोवियत यूनियन had four constitution थे in its life 74 तक, जैसे 1980 में, फिर 24 में एक और था 36, 77, and 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत केम टू एंड, एंड सोवियत यूनियन जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। काइंड ऑफ फेडरेशन जो था यहाँ पे उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। तो आई थिंक नाटो टेस्ट में कई बार आप न्यूज पढ़ते हो तो यूएसएसआर आप पढ़ते होंगे। आफ्टर दिस पॉलिटिकल अपील, न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में इन्होंने कोर एडॉप्ट किया है। बट लुक एट इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 में, एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मली स्टार्ट हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950 से। अराउंड 2 महीने का हमने वेट किया है। मोर देन 69 ईयर जब ये बुक लिखी गई थी, द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू फंक्शन एज ए फ्रेमवर्क विद इन द कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट अपना सारा काम यहाँ से कर रही है, बट अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, बट टाइम टू टाइम हमने अमेंडमेंट जरूर की, वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि इसको चेंज नहीं किया गया? एंड वाज इट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज सो प्रेसाइड, एंड वाई दैट दे फोर्स इन ऑल द चेंज? एक फ्यूचर में क्या क्या होंगे? सम वन द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इट इज ट्रू दैट वी हैव इनहेरिटेड वेरी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द बेसिक फ्रेमवर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? Very much suited to the country. It is also true that constitution makers were very far-sighted, provided for many solutions for future situations. No constitution can provide all eventualities, and no document can such be that it did not sorry, did not that no document can be such that need no change. ऐसा नहीं है कि किसी को भी चेंज जा सकता नहीं, पॉजिटिव चेंज हर एक सोसाइटी को चाहिए। Then how does the same constitution continue to serve the country? So one of the answer to such question is that our constitution accept the necessity of modification according to changing need of the society. इसे amendment करते हैं। Second चीज, actual working of the constitution, there has been enough flexibility हमारे constitution में interpretation में। तो हमारा क्या है, rigidity और flexibility, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है बिल्कुल फ्लेक्सिबल, आप उसको अमेंड कर सकते हैं। both political practice and judicial ruling have shown maturity and flexibility while implementing the constitution. These factors have made our constitution a living document बनाते हैं, rather than a closed and static rule book. ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते। It is a living document. In any society, those responsible for drafting the constitution at particular time would for would face one common challenge, that is provision for the constitution would naturally reflect करेगा effort to tackle the problem that society is facing at the time जो constitution को बनाया गया था। At the same time, constitution must be document that provide the framework of the government for future as well. Therefore, constitution has to be able to respond to the challenge that may arise in the future. In this sense, constitution always have something which is contemporary and something has to be durable importance.
हमारे अंदर वही है, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्रेजेंट नीड में जो भी आपको चीज चाहिए आप अमेंड कर सकते हो अगर बहुत एट मोस्ट प्रायोरिटी की। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फ्रोजन एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं, इसको अल्टर किया जा सकता है। इट इज डॉक्यूमेंट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड नीड रिविजन्स। ठीक है, चेंजेस की भी आवश्यकता है, री एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा। इट इज ट्रू दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट क्या करता है कि हमारे ड्रीम और एस्पिरेशन क्या है हमारे ऑल ओवर इंडिया के कंसर्न सोसाइटी के। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी। इन दिस सेंस इट इज एन इंस्ट्रूमेंट द सोसाइटी क्रिएट फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए बनाया है। एंड दिस ड्यूअल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज लीड टू डिफिकल्ट क्वेश्चन लोगों में है कि स्टेटस क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इतना सेक्रेड है कि कोई इसको चेंज ही नहीं कर सकता? अल्टरनेटिवली क्या इतना ऑर्डिनरी है कि इसको कुछ भी मॉडिफाई किया जा सकता है? सो द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर, इस प्रॉब्लम से उनको भी पता था कि ऐसी चीजें आ सकती हैं। एंड सो टू स्ट्राइक ए बैलेंस उन्होंने बनाने की कोशिश की है। दे प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन अबव द ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर रखा है एक तो, एक्सेप्ट दैट फ्यूचर जनरेशन विल रेस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, इसको डॉक्यूमेंट को रेस्पेक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है दैट इन फ्यूचर दिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी। इवन एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब इसको लिखा गया था, दे वर अवेयर दैट ऑन मैनी मैटर्स देवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन उनके हो सकते हैं। whenever society would veer toward any particular opinion, a change in the constitution provision would be required. ठीक है, thus the Indian constitution is a combination of both the approach mentioned above. ठीक है, constitution is sacred document, it is an instrument है, require change from time to time. In another word, our constitution is not a static document, it is not the final word about everything, and ऐसा भी नहीं कि unalterable नहीं, can be altered. हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 में बात की गई है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन वेरिएशन, रिपील कर सकते हो एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, दैट्स इट। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू स्ट्राइक ए बैलेंस, वो लोग बनाना चाह रहे थे यहाँ पे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंड इफ रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि आवश्यकता है इसको अमेंड ही नहीं कर पा रहे, बट इट मस्ट बी प्रोटेक्ट हो अननेसेसरी चेंज यहाँ पे कोई ना कर सके। इन अदर वर्ड दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो एंड रिजिड भी हो। फ्लेक्सिबल का मतलब ओपन टू चेंज, की हाँ भाई चेंज कर सकते हैं। एंड इट मींस रिजिड का मतलब रेजिस्टेंस के कई चेंज को मना भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजीली मॉडिफाई हो उसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे। एंड इन द केस ऑफ सीज यहाँ पे जब भी बहुत डिफिकल्टी आए उसको रिजिड बोलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंबाइन है दोनों का, तो इसको रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड बोला जाता है। द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑल्सो मे बी सम फॉल्ट सम मिस्टेक इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे न्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी टोटली फ्री ऑफ एरर, नहीं है कुछ एरर यहाँ पे अभी भी है। हमेशा मन के अंदर ये मेन थिंग है कि एरर हो सकते हैं, देयर आर ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी। wherever such mistake would came to light, they wanted the constitution to be easily amended हो सके, ठीक है, ताकि इन मिस्टेक को ठीक किया जा सके। देन देयर वर सम प्रोविजन, ताकि इनके साथ आप बिना काम में छेड़खानी ना करो। ठीक है, कैन बी अल्टर्ड वंस द न्यू पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि नई पार्लियामेंट आई उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया। बट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेमिंग फेडरल पॉलिटी की बात की थी, राइट एंड पावर ऑफ द स्टेट की बात की थी, कुड नॉट बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। ये हमने ऑलरेडी देखा, स्टेट की कंसेंट की आवश्यकता आपको कई जगह पे, फेडरल अगर करेक्टर को चेंज करा चाह रही है। Some other feature were so central to the spirit of constitution that the constitution maker were anxious to protect these chains। ठीक है, these provision had made rigid, these consideration led to different ways of amending the constitution। so how the amend constitution, कैसे इसको amend करना है? एक तो सिंपल और ऑर्डिनरी लॉ जो है तो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं एज मेंशन्ड इन सम आर्टिकल्स, तो देख लेंगे स्पेशल मेजोरिटी से इन बोथ हाउसेज, जो कि एज पर आर्टिकल 368 में बात की है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेशल प्लस से लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यहाँ पे फेडरल करेक्टर, ये भी आपका इसी के अंदर जाएगा।
There are many articles in the constitution which mention that these article can be amended by simple law of parliament से आप इसको कर सकते हो. No special procedure of amendment या उस पर नहीं है आपको. ठीक है. No difference at all between the amendment and ordinary law. तो सिंपल से हो रही तो सिंपल की तरह से हो सकता है. ठीक है. These part of constitution are very flexible. Read carefully the following text of some article of the constitution. In both these article wording किया गया है by law. इंडिकेट क्या करा है कि आर्टिकल कैन बी मॉडिफाइड पार्लियामेंट विदाउट रिकोर्स ऑफ द प्रोसीजर ले डाउन इन आर्टिकल 368. पार्लियामेंट अपने हिसाब से कर सकती है विदाउट कंसर्निंग आर्टिकल 368. तो इसको सिंपल मेजोरिटी कंटेक्ट में रखेंगे. बट कई आर्टिकल में कैन बी मॉडिफाइड इन द सिंपल मैनर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 2 में बात की गई है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट द न्यू यूनियन, एडमिट द यूनियन न्यू स्टेट. कोई भी नया स्टेट आप लेके आ सकते हैं विद अ सिंपल मेजोरिटी. ठीक है. एंड ये आपके आर्टिकल 368 के अंदर नहीं जाएगा. पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी स्टेट को. ये भी आपका सिंपल मेजोरिटी से जाएगा. आर्टिकल 2 and 3 टॉक्स अबाउट इट. फॉर अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन द आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा. देयर आर टू मेथड है कैसे आप इसको अमेंड कर सकते हो. टू डिफरेंट सेट ऑफ आर्टिकल. वन मेथड दैट अमेंड कैन बी मेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टू हाउसेज में जो मेजोरिटी है उसकी स्पेशल मेजोरिटी आप लेके आओ. दो हाउस में जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से. द अदर मेथड इज मोर डिफिकल्ट है. इसमें क्या है स्पेशल मेजोरिटी तो आपको पार्लियामेंट की चाहिए प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. नोट दैट ऑल अमेंडमेंट नीड टू बी इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट. संविधान में अगर कोई भी चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करनी है तो उसका इनिशिएशन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से हो सकता है. स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट. ठीक है. तो इसकी एक्सक्लूसिव पावर है. Beside the special majority in parliament, no outside agency like constitution commission or separate body इसको अमेंड नहीं कर सकती. Similarly, after the passage in the parliament in some cases, state legislature no referendum is required for ratification of the amendment. An amendment bill, like all other bill, goes to president for his assent. But in this case, president has no power to send it back for the reconsideration. ठीक है. These details show how rigid or complicated and amending process कैसा है. ठीक है. Our constitution avoid these complications. This make the amendment procedure relatively simple बनाया है. But more importantly, this process underline an important principle that only elected representative of people are empowered to consider and take final decision on the question of amendment. The sovereignty of elected representative, जैसे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की हम बात करते हैं, बेसिस है अमेंडमेंट प्रोसीजर का. स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करें तो इन द चैप्टर ऑफ इलेक्शन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वी हैव अक्रॉस प्रोविजन हमने देख ली थी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है. लेट अस रिपीट अगेन व्हाट स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है. ऑर्डिनरी all business of the legislature require that a motion or resolution or bill should be scored of a simple majority of member voting at that time. उस टाइम पे जो वोट करेंगे. Suppose that at the time of voting a bill 247 member यहाँ पे प्रेजेंट थे in the house and all of them participate किया था इस वोटिंग के अंदर. then the bill would be passed if at least 124 the half अगर करते हैं और इसके फेवर में है. not so in the case of amendment bill. amendment to the constitution require two different kind of special majority की आपको आवश्यकता है. first those voting in the favor of constitution must at least half of the total strength house की जो total strength है उसका 543 to उसका. secondly support of the amendment must be constitute two-third who actually take part in the voting. फिर अगर 400 में वोटिंग में पार्टी इसका 2/3 आपको चाहिए 66% के आसपास. both houses of the parliament must pass the amendment bill separately pass करेंगे same manner में. and there is no provision joint sitting का provision नहीं है. for every amendment bill this simple majority is required. can you see the significance of this requirement? in the Lok Sabha 545 हमारे पास member है. there are any amendment must be supported by a minimum 273 member का support शुरू में चाहिए. and even only 300 member are present at the voting. The amendment must be looked at 273 का सपोर्ट हो. बट इमेजिन जैसे 400 मेंबर है लोकसभा में वोट किया अमेंडमेंट बिल पे. हाउ मेनी मेंबर्स शुड सपोर्ट द बिल. तो इसमें 2/3 देख सकते हैं. इन एडिशन टू दिस
both the houses must pass the amendment. Special majority से separately pass करेंगे. This means that unless there is sufficient consensus है और proposed amendment के अंदर, and it cannot be passed. Then if the party in power enjoy very thin majority, बहुत कम majority, it can pass legislation for its choice and can get budget approved when if the position does not agree. But it would need to take at least some position, opposition parties into confidence. And if you it wanted to amend the constitution, so the basic principle behind the amending procedure क्या है यहाँ पे that is should be broad support from political party and parliamentarian. यहाँ पे बात की गई है टू प्रिंसिपल डोमिनेट करते हैं वेरियस प्रोसीजर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं इन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट one is principle of special majority. For instance, constitution of US, South Africa, Russia have employed this principle. In case of constitution of US, it is 2/3 of majority, while South Africa and Russia के अंदर इसमें 3/4 क्या हो सकता है 75%. So the other principle is that popular among many modern constitution that people participate in the process of amending the constitution. Switzerland, people can even initiate an amendment. लोग ही डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं. Other example of countries जहाँ पे initiate or approval amend the constitution are Russia, Italy, among others. If those who are dissatisfied with the constitution has only to obtain 2/3 majority, and if they cannot obtain even the dissatisfaction with the constitution cannot be deemed to be shared by general public. And note that Bhimrao Ambedkar is talking here only that parliamentary majority. He referred to the sharing by the general public. This indicates within the majority there is a principle of public opinion. क्योंकि यहाँ से इलेक्ट होके आए थे लोगों ने इनको इलेक्ट करके भेजा है. Ratification by the state जहाँ पे स्टेट का भी कंसेंट चाहिए. For some article constitution special majority is not sufficient. वहां पे आपको when an amendment aim to modify article अगर distribution of power सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में है सो वहां पे आपको स्टेट का कंसेंट चाहिए. अगर रिप्रेजेंटेशन स्टेट की में आपको चेंज कर रहे हो वहां पे आपको चाहिए. इट इज नेसेसरी दैट स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड एंड गिव देयर कंसेंट. We have studied that federal nature of constitution. Federalism means power of central state must not be the mercy of central government. वो आपको डिवाइड करनी ही करनी पड़ेगी. The constitution has ensured this क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, प्रोवाइडिंग दैट लेजिस्लेचर ऑन half of the state have passed the amendment bill before the amendment came into effect. We can say that for some part of the constitution, great or wider consensus in the polity is expected, and this provision also respect the state and also give them participation. At the same time, care is taken to keep the procedure somewhat flexible भी है. In its more rigid format, consent of only half of the state is required, and simple majority की हमने यहाँ पे बात की है स्टेट लेजिस्लेचर में. Thus the amendment principle process is not impracticable नहीं है. After taking into consideration, this is more stringent condition. We may summarize that Constitution of India can be amended through a large consensus and limited participation of the state. The founding father took care that Constitution would not open to easy tampering. Yet future generations were given the right to amend and modify it according to the need and requirement of the time. के हिसाब से यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट यहाँ पे क्या कर सकते हो. सब्जेक्ट ऑफ अमेंडमेंट सिटीजनशिप कर रहे हो तो सिंपल से आप कर सकते हो. रिलीजन Why there have been so many amendment? अभी तक कितने अमेंडमेंट क्यों हुए? तो जनवरी 26 की बात करें 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट 69 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है. इन दिस ईयर इट वाज अमेंडेड 103 बार इसको अमेंड किया जा चुका है 12 जनवरी तक. Give the relatively difficult method of amending the constitution. The number of amendment appear quite high, बहुत ज्यादा है. Let us try to find out how many amendment took place and what it means, ठीक है. Let us look at the brief history of amendment. Look carefully at the graph below. चलो देखेंगे. Some information are presented in two different ways. First graph depict कर रहा है कि number of constitution amendment made every 10 year. देख सकते हो इस टाइम पे आपके
8 के आसपास हुए हैं यहाँ पे, 14 से भी ज्यादा, 61 में सबसे ज्यादा हुए हैं 17 से लेके यहाँ पे 20 से भी ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये हुए हैं। Constitutional amendment made every 10 years. The bar indicate number of amendment in that period. Second, depict that way for the every 10 year. कितना टाइम आपको लगा है, ये भी आप देख सकते हैं। अराउंड 11 मंथ आपको लग गए यहाँ पे, 6 मंथ टाइम आप देख सकते हैं। You will notice that two decade 1970 to 90 सबसे ज्यादा अमेंडमेंट यहाँ पे हुए थे, ठीक है। On the other hand, second graph tell us more story amendment 10 amendment took place short span of 3 years between 1974 76 again just 3 year from 2001 से 2003 तक। Okay, maybe it can be year ठीक है, देख रहे हैं। 10 amendment took place if the political history of our country these two periods are remarkably different। first period जब कांग्रेस की डोमिनेशन थी, कांग्रेस पार्टी had a vast majority in parliament में 352 सीट्स लोकसभा, मेजोरिटी थी मोस्ट स्टेट असेंबली की। ऑन द अदर हैंड ए पीरियड 2001 से 2003 में मार्क बाय द कोलिशन पॉलिटिक्स आ रहा था, जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आ रही थी, बिटर राइवलरी बिटवीन बीजेपी एंड इट्स ओपोनेंट इन अनदर पिक्चर, and yet this period has been many 10 amendment in just 3 years. Incidence of amendment is not dependent merely on the nature of majority. There has always been criticism about the number of amendment. इतने ज़्यादा क्यों कर दी? It is said that there have been part 2 one amendment of the constitution. On the face of it, 103 है 69 year के अंदर. It seems to be somewhat odd. But the two graph above the suggest that not only due to political consideration, barring the first decade after the commencement of constitution, every decade has witnessed a stream of amendment यहाँ पे चल रहा है। This means that irrespective of the nature of politics and the party in the power, amendment were required time to time, आवश्यकता है कोई पार्टी में। Was this because inadequacy of the original constitution? क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इतना एडिक्वेट नहीं था कि हमको बार बार अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं हम लोग में, अकॉर्डिंग टू टाइम ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। एंड क्या कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल है, चलो देखते हैं कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या बनाया है। अमेंडमेंट मेड सो फार कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, दीज अमेंडमेंट आर टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं एंड वर्क ओनली क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कुछ एक मॉडिफिकेशन, कुछ एक डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, ओरिजिनल प्रोविजन क्या था। दे आर अमेंडमेंट ओनली लीगल सेंस, बट इन द मैटर ऑफ फैक्ट उनका कोई डिफरेंस खास नहीं है अभी तक। दिस इज ट्रू द अमेंडमेंट दैट इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, जो कि 60 टू 62 की है 15 अमेंडमेंट से। सिमिलरली सैलरी ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज हुई है 54th अमेंडमेंट से। वी हैव आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोविजन रिजर्व्ड सीट इन द लेजिस्लेचर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इस पे आपने किया है। ओरिजिनली प्रोविजन सेड दैट रिजर्वेशन वर्क पीरियड फॉर 10 ईयर था, लेकिन बार बार से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इट वाज नेसेसरी टू एक्सटेंड द पीरियड बाय 10 ईयर। हर साल 10 साल में एक प्रोविजन यहाँ से हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अमेंडमेंट हो रहा है। This had led to the sixth amendment, तो यही से हो गई, but these amendment have not made any difference to the original provision में कुछ खास चीज नहीं है, बस इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। In this sense, it is only a technical amendment है, लोगों पे इसका कुछ खास प्रभाव अलग से नहीं पड़ रहा, जैसे ये उनकी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए किया जाता है। डू यू रिमेम्बर डिस्कशन इन द चैप्टर 4, जो कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट हमने देखा था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। It was assumed that our parliamentary government, the president would be normally abide by the advice of council of ministry, वो काम करेगा। Only reiterated by a later amendment 74 का clause 1 है। To clarify the advice of council of minister will be binding रहेगी president पे, तो उसी के अकॉर्डिंग्स पे काम करना पड़ेगा। In reality, amendment did not make any difference. That is exactly have been happening all through. Amendment only way of explaining को इसको ठीक है कि president shall act according with the advice of council of minister, that's it। फिर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हम देख सकते हैं। ए नंबर ऑफ अमेंडमेंट आर द प्रोडक्ट है अलग अलग इंटरप्रिटेशन के गिवन बाय जुडिशरी एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे। व्हेन दीज क्लैश द पार्लियामेंट हैज आंसर्ड एन अमेंडमेंट, यहाँ पे कर देती है, अंडरलाइन कर देती है एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को, और ये ऑथेंटिक बता रही है। इट इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट वेरियस इंस्टीट्यूशन would interpret the constitution and particularly the scope of their own power in a different manner. Many times the parliament did not agree with the judicial
इंटरप्रिटेशन में वो ठीक नहीं मानती अपने आप को कि ये गलत है, तो ये अपने आप को नहीं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को सही नहीं मानती, देयरफॉर अमेंड कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ओवरकम द रूलिंग ऑफ जुडिशरी को, उसको ओवरकम करने के लिए। इन द पीरियड बिटवीन 1970 ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। इन द चैप्टर ऑफ जुडिशरी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इश्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट में क्या क्या इश्यूज, एंड वन was the relationship between the fundamental right and directive principle. The other was scope of right and property, private property में. Third was scope of parliament, कितना वो amend कर सकती है. 70 से 75 में parliament repeated made amendment to overcome adverse interpretation of the judiciary by the judiciary. ठीक है. It may be kept in mind that during 1970 or 75 में many political events were unfolding, and thus this was the history of our constitution. Development can be fully understood only in the context of the political of that country, politics of that period. ठीक है, you will know about these issues in the next year when the political history of independent हम देखेंगे, वो तो हम इसमें नहीं देखने वाले, वो में भी नई सीरीज आएगी उसमें हम देखेंगे. Amendment through political consensus. Thirdly, there is another large group of amendment that have been made a result of consensus among the political parties. We may say that a consensus made it necessary that some change to be made in order to reflect the prevailing political philosophy और aspiration को देखने के लिए सोसाइटी 2020 के हिसाब से. Many of the amendment post 1985 में इंस्टांस है इसी का. And remember one question above about the peculiarity that even when there is a coalition government अगर है, this period so many amendment, and the reason is because these amendment were based on evolving consensus. ठीक है, सर्टेन इश्यूज पर कि हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. स्टार्टिंग विद द एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd अमेंडमेंट से आया था. दिस पीरियड सो द सीरीज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस. अपार्ट फ्रॉम एंटी डिफेक्शन 52nd 91st, कुछ और भी, जैसे 61st में आपने क्या किया, मिनिमम एज कम कर दी 21 से 18 वोट डालने के लिए. 73 74 लास्ट वीडियो हमने देख लिया था. Some amendment clarifying the expanding scope of reservation in job 1992-3 में. ओवरऑल कंसेंसस आपने बदला है यहाँ पे, मेजर क्या है इन सबको. एक amendment regarding these without much difficulty 77 81 82 में. कुछ एक controversial amendment भी है. Our discussion so far should not create an impression that there has never any controversy. क्या आज तक ना हुई वैसा हो सकता है? Obviously no. In fact, amendment during the period 1970 और 80 में created a lot of legal and political controversy यहाँ पे देखने को मिली. Parties that are opposition में थी during this period, so many of these amendment as an attempt by ruling party to subvert the constitution, and in particular 38 39 42nd amendment have been the most controversial amendment रहे हैं. These three amendment were made in background of इंटरनल इमरजेंसी के हिसाब से यहाँ पे देखा है कि डिक्लेयर इन द कंट्री, जो कि जून 1975 में किया गया था. They sought to make the basic change in the crucial part of the constitution. 42nd अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे यहाँ पे मैक्सिमम अमेंडमेंट यहीं से हुए हैं. और पर्टिकुलर सीन इज वाइड रेंजिंग अमेंडमेंट अफेक्टिंग लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी ओवरराइड करने की कोशिश की थी केस में, भारतीय केस में. इवन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 6 ईयर की बात कर रहे थे. इन द चैप्टर ऑफ ऑन राइट्स यू हैव रीड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज देख ली थी, and they are included in the constitution by amendment. And 42nd amendment also put restriction review of judiciary पे भी रख रही है. ठीक है, it was also said that at the time of amendment was particularly a rewriting of many parts of the original constitution. Do you know that amendment made in the change to the preamble to the 7th schedule of constitution and 53 parties articles of the constitution. ठीक है, many MP belonging to the opposition party were in jail when this amendment was passed in parliament. In this backdrop, election were held in 1977 and ruling party Congress को हरा दिया था. The new government through the necessary to consider these controversial amendment 43, 44 को cancel कर लिया most of the change जो कि affect हुए थे 38, 39, 42 से. And constitution balance यहाँ पे दोबारा से restore करने की कोशिश की. अब आता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, इसको तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते. वन थिंग
that had long lasting effect है on evolution of Indian constitution पे. क्या है basically basic structure की theory. आपने जरूर सुना होगा judiciary advance this theory famous case केशवानंदन भारती. Ruling has contributed to the evolution of constitution in the following ways. यहाँ पे बताया गया है कि it is a set of specific limit लगती है पार्लियामेंट के amend the constitution की इन पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते. It says that no amendment can violate the basic structure of constitution. It also allows Parliament to amend any and all part of the Constitution within its limitations. जो आपको दिया गया है उतना ही कीजिए. It plays that the judiciary has the final authority है कि deciding कि amendment violate कर रहा है basic structure को या फिर नहीं कर रहा, और basic structure में क्या क्या आएगा सारा judiciary के हाथ में. तो judiciary यहाँ पे आपका रोल प्ले करेगी. Supreme Court gave Keswarandan ruling in 1973. In past 4 decades, the decision has governed all interpretation of the constitution, and all institutions in the country has accepted the theory of basic structure. In fact, the theory of basic structure is itself an example है living document का, and there is no mention of the theory in the constitution. तो constitution के अंदर basic structure वैसे word नहीं लिखा था, ठीक है. It has emerged from the judicial interpretation. The judiciary and the interpretation and its interpretation have practically amend the constitution without a formal amendment. ठीक है. All living document evolve in this manner through the debate, argument, competition, political parties, practical politics. 1973 court has in many cases elaborate किया है theory of basic structure को and given instance कि what constitute basic structure में क्या क्या आएगा in India के अंदर. In a sense, the basic structure doctrine has further consolidated the balance between the rigidity and flexibility का एक balance है basic structure, ठीक है. By saying that certain parts cannot be amended, it has underlined the rigid nature while allowing other amendment कि आप इनको flexibility से ही कर सकते हो. Review of the constitution की बात करें, in the late 90s, effort were made to review the entire constitution. In the year 2000, a commission to review the working of constitution was appointed by government of India under chairmanship of retired Chief Justice Supreme Court के कौन थे? Justice वेंकटाचार्य, ठीक है. Opposition party and many organization boycott किया था इस कमीशन का. While a lot of political controversy हुई थी surrounding this commission, and commission stuck to the theory of basic structure and did not suggest any measure that would danger the basic structure of the constitution. This shows that significance कितनी basic structure थी. There are many other examples of how judicial interpretation change हुआ है time to time, understanding of the constitution. In many decisions of the Supreme Court held that reservation in job and education institution cannot exceed 50% से ज्यादा आप नहीं कर सकते सारी सीट. This has now become an accepted principle बन गया है. Similarly, in the case involving reservation for other backward class, the Supreme Court introduced the idea of creamy layer. Person belonging to this category, इनको आप जॉब के अंदर कोई खास रिवीजन नहीं दोगे. In the same manner, judiciary has contributed to an informal amendment by interpreting various provisions concerning the right to education, right to life, liberty, from manage minority education institution, and these are instances of how ruling by court contribute to evolution of constitution. फिर constitution as a living document जो मेन मुद्दा तो यहाँ से हम देखेंगे. Almost like a living document, keeps responding to the situation circumstance time to time. Living document की तरह respond करता है experience में भी ठीक है. Riddle we mentioned the beginning about the durability. So many changes in the society. Constitution to effectively because ability to be dynamic, to open interpretation, and ability to respond to the change situation. Hallmark a democratic constitution, right? तो ये याद रखना. It is a democracy. In it, democracy practice and ideas keep evolving time to time. Society देखेगी उस हिसाब से. A constitution which protect करे democracy को and yet allows for evolution, new practice. Not only durable but also the subject of citizens. Important point has the constitution been able to protect its democracy. ठीक है. In the past 6 decades, some very critical situation arose in the politics and constitutional development of the country. We have made a brief reference to some of these chapter already. In terms of the constitutional legal issues, most serious question क्या है? That came to be again and again 1955 में about the supremacy of parliament के बारे में.
In parliamentary democracy, the parliament represent the people and therefore it is expected that he इसका other hand है executive और judiciary के अंदर, but at the same time next of the constitution had given power to the other organ of the government also. Supremacy of parliament has to be operated within the framework maker. Democracy is not about the vote and people representation. It is also about principle of rule of law पे भी काम करती है. Democracy is also about developing institution and working through these institution. All the political institution must be responsible to the people and maintain a balance with each other. सबका आपस में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. फिर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जुडिशरी का, जिसको देखती है बिटवीन जुडिशरी पार्लियामेंट कंट्रोवर्सी चलती रहती है. पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लॉज अमेंडमेंट, इंटरेस्ट ऑफ पुअर बैकवर्ड, इन सब में जुडिशरी इंटरेस्टेड दैट ऑल दिस हैज टू बी टेक विद इन द फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया उसी पे काम कीजिए. प्रो पीपल मेजर शुड नॉट बी बाईपास लीगल प्रोसेस. ऐसा नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ी पॉलिसी अपने आप में सोच ली और उसने बहुत सारे लीगल प्रोसेस को ही छोड़ दिया. बिकॉज वंस यू बाईपास लॉज even with a good intention, it can an excuse to the power holder to use their power arbitrarily. वो अपनी मनचाही कर सकते हैं फिर तो उसके नाम पे. And democracy is much about checks on arbitrary use of power. ये भी याद रखना है. And it is about the well-being of people के बारे में बात करता है. Success of working of Indian Constitution lies in resolving these tensions. The judiciary in the famous case of Anand Bharti ruling क्या था? We found about a way out of the existing complication by turning to the spirit of constitution rather than the letter. If you read the constitution, you will not find any mention of basic structure नहीं मिलेगा. ठीक है. Now ever does the constitution such part of basic structure. ठीक है. इन्होंने भी कहीं नहीं कहा. In this sense, basic structure theory जो है intention of judiciary है. ठीक है. How did invent a non-existence thing and how it is that all institutions have accepted this during the past 4 decades. Therein lies in the distinction between the letter and spirit. The court came to the conclusion that reading a text or document, we must respect the intent behind the document, and mere text of the laws is less important than social circumstance and aspiration, and that have we procured that law or document. The court was looking at the basic structure as something without which the constitution cannot be imagined at all. This is an instance of trying to balance. इन समय बैलेंस याद करता है. फिर एक चीज और भी है, मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप. जब लीडर्स को उतना नॉलेज नहीं है उसके हिसाब से. अब डिस्कशन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी इज द पैराग्राफ अबाउट ब्रिंग अबाउट वन मोर फैक्ट इन बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट कंट्रोवर्सी जो कि 1967 से 73 तक चली थी. पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव आल्सो रियलाइज दैट बैलेंस एंड लॉन्ग टर्म व्यूज जरूरी. After the Supreme Court ruling of the case of Anand Bharti, some attempt were made to ask the court to reconsider its ruling, but when these failed, 42nd Amendment was parliamentary supremacy को assert किया गया. But the court again repealed its earlier stand in the Minerva Mill case. Therefore, 4 decades after ruling in the case of Anand Bharti, ruling has dominated our interpretation of the constitution. Political parties, leaders, government, parliament accepted the idea of inviolable basic structure को लास्ट में उन्होंने मान लिया. Even when this was a talk about review of the constitution, that exercise could not cross the limit set जो basic structure के ऊपर है उससे आपको क्रॉस ना. When the constitution was made, leader and people of our country shared a common vision of India. In Nehru famous speech at the time of independence that reached with the destiny. And in the Constituent Assembly, also all leaders mentioned vision, dignity, freedom of individual, social, economic equality. सब हमने बात की है. यूनिटी बेस्ड और नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर है. विजन हैज नॉट डिसअपियर्ड. People and leader alike have to vision and hope to realize it. Therefore, the constitution based on vision has remained an object of respect and authority even after half a century. The basic values governing our principle remain intact. Conclusion की बात करें, there can be still debate है about constitution की basic structure में क्या क्या आएगा. Nothing wrong in such debate. We must remember that politics in the democracy is necessary है. डिबेट जितने अच्छे होंगे उतने ज्यादा आपके रिजल्ट आ सकते हैं, नई नई चीजें इवॉल्व हो सकती हैं.
साइन है डाइवर्सिटी, लाइवलीनेस, ओपननेस का। डेमोक्रेसी वेलकम डिबेट्स, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। एट द सेम टाइम our political parties and leadership have shown maturity in setting limits to these debate, because politics is also about the compromise and give and takes के ऊपर है। एक्सट्रीम पोजीशन में भी theoretically very correct हो, ideologically उनके attractive हो, but politics demand that everyone is prepared to moderate their extreme views, sharp position, and reach a common minimum ground. Only then a democratic politics become possible. And politicians and the people of India have understood and practiced these skills that made the experience of the working and democratic constitution quite successful. Among the different organ of the government, there will always have competition for one is and more important than other. They will always fight over the constitution, welfare of the people. But in the last instance, the final authority lies with people, their freedom and their well-being constitutions, purpose of democracy, outcome of the democratic politics आपको समझना चाहिए। That's it in this chapter. ये हमारा एक चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 10 विल डिस्कस इन दिस। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको जितना नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू और नेक्स्ट डे।